Okay, guys, I'm starting this video. Okay, this is the Excel data sheet where Hudson Pharma will be feeding their daily data. So we have got 6 sheets, 6 to 7 sheets, and every sheet belongs to a matrix, a KPI, which they will be using in the dashboard. So here we have got like date, theoretical time, available time, theoretical output, actual output, approved units, and effective units. Uh, I just want to show you how the data is going to be fed in the system, and we will explain these each of the columns when we will be using the we will be showing the Power BI dashboard. So don't worry about it. I'm just showing you how data feed is going to be work. So like they have date for a month, and for every day they will be feeding these data in the sheet, and it is automated. So like if you feed the data, the other data will be calculated automatically. Then we have got 6 sheets, so on every sheet there is a date, so that the Power BI knows on which date what happened and what will be the data for each date. So we have like this sheet for operational effectiveness, and this sheet is for overall operational effectiveness and overall equipment effectiveness. Then this is for overtime, where overtime and regular time is mentioned. Then this is the sheet for downtime, where they have theoretical time for a whole day, and the breakdown time, breakdown of machine offered for a minute. These are all in minutes. Then they have this utilization, where they have actual output, maximum possible output. Okay, the one thing is they don't need to it's a CSV file, or it can be an Excel file as well. So they don't need to work on these on the statics of these Excel files, because it's just to maintain the data, and then the statics will be shown in the Power BI desktop dashboard. So this is first time yield, and this is a typical calendar for the whole year. Okay, so I'm just moving to Power BI dashboard there. Okay, so this is the plant downtime report, which is calculated in minutes. Okay, here you can see that we have this date, and we have the total breakdown per day for every day. It's a it's a rough data. It's a like imaginary data, so it doesn't need to be real data, because the real data is confidential with Hudson Pharma, so they didn't want to share with us. So we are just imagining the data, and then we're taking this static project. So here, like you can see that we have 70-minute uh, down breakdown, which happened. Anything can be happened. They might have power outage. They might have machine breakdown, and they might have some trouble, minor trouble in operation. So we have this data for whole month. Then okay, so this shows, like if you click it on the uh, any date, it will highlight that date, and it's concurrent data. So again, we have this slicer. We have range. We have the range of dates in it. So if I move this slicer uh, a bit, so the data gets changed. So it is taking account for only the range of date which I have given to Power BI. So it is showing the data from 1st Jan to 11th of Jan. This is how this is the best benefit for using Power BI. You can just drag it further. It will change the data and will share you the exact data. And this is plant downtime report calculated in minutes. So you have this chart for downtime percentage by date. Like you are having uh, daily daily downtime report, daily downtime data in percentage. Like what was the percentage of downtime on that particular day out of 100%. Okay, so like we have this
we have this card which is showing overall downtime percentage, and that is 9.98%. So it is basically cal- calculated by dividing the total breakdown occurred in particular day uh, by actual available time they had. So this is the ratio. So if I change this, so it gets also changed. So like for 4 days we had overtime downtime percentage as 15.75%. Okay, this is how it's. We can also list down this just by okay. I will show it in another tool. Okay, so this is total breakdown by week. We have divided this by week, so they are getting to know that in what week, what was the actual minutes of downtime they had, and what are the percentage of them which is counted as a monthly breakdown. So it's like they had 125 minutes of breakdown in this particular week, which is fifth week as it is showing, and total breakdown was of 125 minutes, and this was 10.85% of the total. This was 245 minutes of breakdown in week third, and they had 21% when we compared it to overall. So this is how it works. This graph is for total breakdown per day by date. It is like in numbers of minutes for each day. So you can see that they have multiple dates in their axis, and total breakdown per day on the y-axis, and it's showing how what was the actual quantity of total number of minutes they had in breakdown. Okay, let's move into another KPI, which was first time yield. Okay, so based on the data which they fed into the Excel sheet, they have this. We have created them this Power BI charts dashboard, and this is like daily report in which it is showing that how much first time yield is basically how much approved units or how much perfect units a, a plant produces uh, uh, in a day. So this is like they produce 82,000 approved units and perfect units, which were good for which were good to be sold, and they also produced 3,000 uh, effective units on that specific date as well. So it was like total 85,000 units being produced in that particular date. So it shows daily basis. So this is like the background shows that how much it was, and when the quantity gets bigger, so like this grid keeps moving. So it is like the bar is full, and that is and when they have lesser amount, so data is a bit less. So this is how it works. इसमें हमने कलर का बेसिकली एक पैटर्न डाला है कि अगर जिसमें ज़्यादा डिफेक्ट होंगे वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, और जो थोड़ा अगर लाइट शेड होता रहेगा उसी तरह एज इट इज जैसे नंबर जो है कम होते रहेंगे. Okay, so this is like first time yield by date in percentage. So on that particular day it is showing that they had 99.22 yield, 22% yield on 16th of Jan. So this is how like we can click on particular day and we can know what happened. So जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा फर्स्ट टाइम पे, तो डेली रिपोर्ट की भी चेंज हो गई रिपोर्ट, और उसमें पर्टिकुलर डे का आ रहा है, और इसी तरह कार्ड पे भी जो है पर्टिकुलर डे का एवरेज आ रहा है. उसी तरह इस अप्रूव यूनिट्स की उस पर भी आपको पर्टिकुलर डे का शो हो रहा है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इफ यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, तो वो सारा डेटा जो है वो उसी के सिंक्रोनाइज होकर उसी की स्क्रीन आ जाती है. तो ये हमें शो कर रहा है अप्रूव यूनिट्स जो है किस तरह, मतलब पर डे के हिसाब से कितने बने थे एक अलग चार्ट में, सो दैट दे नो, मतलब अगर दे वांट टू कैलकुलेट अप्रूव यूनिट्स और इफ दे वांट टू सी डिफेक्टिव यूनिट्स, तो वो भी डेली बेसिस पे यहाँ पे मेंशन होगा.
ठीक है। इसी तरह इस पे ये डेली जो है वो ग्रेड से जो है स्लाइसर से, डेट स्लाइसर से वो स्लाइस कर सकते हैं। दिस हाउ इट वर्क्स। एंड एवरेज फर्स्ट टाइम यील्ड इनको ओवरऑल दिखा रही है कि एवरेज फर्स्ट टाइम इस मंथ की क्या थी, दैट वाज 99.16। अगेन दिस इज मंथली, दिस इज वीकली डेटा। सो ऑन पर्टिकुलर वीक दिस हैपेंड, they had 99.39 first time yield, which is 25.09% of overall average yield. तो इसका वेटेज जो 25.09% है, और ये एज इट इज उसकी डेली रिपोर्ट में उसी वीक की डेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और इसी तरह इस ग्रेड में भी चेंजिंग हुई, इस ग्रेड में भी, इस ग्राफ में भी। दिस हाउ इट वर्क्स। देन वी हैड weekly overall, like we calculate overall equipment efficiency as it's shown in this bottom of that report. इसमें तीन फैक्टर थे, अवेलेबिलिटी रेट, परफॉर्मेंस रेट, क्वालिटी रेट। अवेलेबिलिटी रेट शोज की मशीन आपकी कब तक अवेलेबल थी, अवेलेबल टाइम से, और आपने कितना उसको चलाया है। तो इसमें हमने एक थ्योरेटिकल टाइम लिया हुआ है कि अगर लेट्स से दे हैव 6.5 आवर्स ऑफ मशीन रनिंग, तो हमने उसको कितना यूटिलाइज करा है उनकी मशीन को। तो दैट इज 90.02% उन्होंने अपनी मशीन यूटिलाइज करी है। बाकी जो है वो ब्रेक डाउन टाइम होगा। उसी तरह उनका परफॉर्मेंस रेट है कि उस टाइम पर जो प्रोडक्शन होनी थी थ्योरेटिकल टाइम से, उसके हिसाब से उन्होंने कितनी प्रोडक्शन करी है। तो वो अभी 96.24 जो है उनकी प्रोडक्शन है। इसी तरह क्वालिटी रेट है कि जो प्रोडक्शन उनकी अच्छी हुई है उसके हिसाब से कितनी जो है उसमें डिफेक्टिव थी, और कितनी तो उसमें 99.15% का रेशियो आ रहा है। उसी तरह फिर हमने इसको जो है वीकली उसमें रेशियोज को किया है कि ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी जो थी, जो कि यहाँ पे कैलकुलेटेड 90.26 का वीकली ब्रेकअप है, ये इसका जो है ओवरऑल ब्रेकअप है। और इसके अलावा डेली प्लांट अवेलेबिलिटी, थ्योरेटिकल मिनट इसमें बताया हुआ है, अवेलेबल टाइम इसमें बताया, दिस ऑल ऑटोमेटिक। देन उसके बाद थ्योरेटिकल आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट का कंपैरिजन है। फिर उसके बाद अप्रूव यूनिट और डिफेक्टिव यूनिट के चार्ट है। तो वी जस्ट मूव द रेंज, और ये या अपलोड हो रहा था। जस्ट वी जस्ट मूव द रेंज एंड इट शोज के फिगर चेंज हो गई सारी। तो वी वेंट इनटू वीक, फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ का डाटा शो कर रहा है। ये उसकी ओवरऑल फर्स्ट वीक की corresponding इसकी वो है OEE, ओवरऑल एफिशिएंसी। देन अगेन ये ओवरऑल ऑपरेशन एफिशिएंसी, अच्छा ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी का जो डिफरेंस है OEE से, दैट इज के अब इसमें अवेलेबिलिटी रेट जो होता है वो टोटल ऑर्गेनाइजेशनल आवर से कैलकुलेट होता है। तो इसमें इसकी अवेलेबिलिटी रेट जो है वो 73% हो गया, एज अपोज टू जो यहाँ पे था OEE में, दैट वाज 90.02%। बिकॉज OEE में जो है अवेलेबिलिटी रेट जो है वो आपकी थ्योरेटिकल टाइम होता है, जिसमें आप अपना जो है ब्रेक और इस तरह के और जो ब्रेक अनप्रोडक्टिव टाइम होता है, लाइक आप क्लीनिंग मशीन की क्लीनिंग चेंज ओवर, वो टाइम आप एक्सक्लूड कर देते हो। और इसमें जो है आप वो टाइम सब इंक्लूड करते हो, दैट 9 आवर्स हमने इसमें लिए हैं। तो उसके हिसाब से अगर 6.5 आवर्स की इनकी प्रोडक्शन मशीन रन कर रही है, तो दैट इज 73.14% ऑफ दिस होल लाइक अवेलेबिलिटी ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। परफॉर्मेंस और क्वालिटी रिमेन सेम। ओके, तो ये इसी तरह हम लोग इसमें डेट चेंज कर सकते हैं। ये वीकली आ रहा है, ये क्वालिटी रेट आ रहा है। देन ये हम वीक है, अगर हम वीकली करते हैं तो 2 वीक्स का जो है हमें डाटा शो कर देगा। स्लाइसर है, इसमें हम 1 वीक करते हैं तो ये 1 वीक का शो कर देगा। दिस हाउ इट वर्क्स। नाउ मूविंग टू ओवर टाइम रेट। तो इसमें ये शो कर रहा है कि डेली ओवर टाइम हमारे पास कितना था डे वाइज। तो ये उस हिसाब से इसका चार्ट ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, ट्रैक कर रहा है डाटा। देन वीकली ओवर टाइम परसेंटेज समरी आ रही है कि वीकली ओवर टाइम क्या था वीक वाइज। देन ये मिनट्स वाइज आ रही है कि कितने मिनट जो थे वीक में यूज हुए हैं। इसी तरह हम इससे जो है वीक का डाटा चेक करते, तो ये पर वीक जो है हमें दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम ऑल कर देंगे तो ये सबका दिखाएगा। इसी तरह ये ओवर टाइम इन आवर्स जो है, ये स्पीडो एक गेज मीटर है जिसमें दिखा रहा है कि 8.5 जो आपका मंथली वो था, और 10% आपका टारगेट हमने 10 आवर्स जो है वो हमने टारगेट सेलेक्ट किया हुआ था कि सक्सीड नहीं करना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट गोना शो कि आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं। फिर ये आपको रेगुलर आवर्स बता रहा है कि कितने रेगुलर आवर्स थे। देन दिस लास्ट वन इज फॉर यूटिलाइजेशन।
ओवरऑल आपकी प्लांट यूटिलाइजेशन बता रहा है कि आप कितनी ज़्यादा कैपेसिटी जो है डिज़ाइन कैपेसिटी के अगेंस्ट में आप कितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा आपका प्लांट जो है मतलब अपनी यील्ड निकाल रहा है। तो दिस इज़ लाइक कंपैरिजन कि आप डेली एक्चुअल आपकी क्या थी, थ्योरेटिकल क्या थी और मैक्सिमम क्या थी। तो एक्चुअल जो है वो आपकी सबसे कम एक्चुअल आउटपुट, देन उसके ऊपर जो है आपका थ्योरेटिकल आउटपुट है जो आपका मतलब ब्रेक टाइम और इस तरह के चेंज ओवर के टाइम, मशीन क्लीनिंग का टाइम हटा के देन ये आपके ऑर्गेनाइजेशन टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट जो है आपको 9 आवर्स में कितना होना चाहिए था, ये इससे आपके कंपैरिजन है। देन ये अगेन वीकली यूटिलाइजेशन रेट है कि वीक में पर वीक जो है क्या यूटिलाइजेशन थी मशीन की, तो आप सो दैट यू नो कि किस वीक में हमने लैगिंग करी है। ये इसका इसी हिसाब से आउटपुट कंपैरिजन चार्ट्स इन यूनिट्स है कि हर मतलब एक्चुअल कितने आपका आउटपुट होना था और कितना है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, थ्योरेटिकल कितना हो सकता था। दिस इज हाउ इट शोज। इसी तरह फिर हमने ये क्यूमुलेटिव वैल्यू चार्ट शो करा है जिसमें दे विल नो कि किस पर्टिकुलर टाइम से कब तक जो है कितनी मतलब इनकी आउटपुट था। लाइक 1 Jan से 15 Jan तक देयर आउटपुट एक्चुअल आउटपुट वाज 14,81,000 यूनिट्स। देन ये इसका थ्योरेटिकल शो कर रहा है दैट शुड बी 15,72,900 एंड देन इसके मैक्सिमम शो कर रहा है कि इट शुड बी 21,60,000 how it works and इस हिसाब से डेटा साइजिंग एंड देन दिस इज ओवरऑल यूटिलाइजेशन रेट। दिस अगेन शोज कि कितना जो है मंथ का जो है आपका 70.53% है और आपका टारगेट क्या होना चाहिए सो दैट यू कैन अचीव इट एंड ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100%। And this again you can like use this slicer and you can want to see the rate of fifth, so you can just click it and you have to fifth का सारा data reflect कर देगा। This is how it works and just clearing all options. This is how, so this was the dashboard और obviously we will have to learn a lot of things, इस पे बहुत काम अभी करना बाकी है so that मतलब like they can keep doing it or if they want to have other KPIs so we can include them, but it's basic it's a good dashboard for them so that on the starting from the scratch they can utilize it and then just using it and then getting the benefit. So, thank you all.